सो के उठोगे ना आपको दर्द होगा, बिकॉज अभी गर्म ही है. ओके, सी एक पॉइंट था लास्ट मीटिंग जो वी वर जस्ट डिस्कस्ड एंड अबाउट दिस आरओआईसी एंड ऑल. सो प्रवीण सर ने बोला कि वो कैपेक्स के ऊपर जाता है. सो इट इज नॉट ओनली कैपेक्स. सो नाउ आई वांट टू ट्राई टू कैलकुलेट reinvestment rate. So everybody knows PAT minus dividends is your retained earnings, but what is the amount that the company is reinvesting in any form? So what I've done is I've taken the total capital employed, right? This is my total capital employed for the company. मैंने क्या किया है, मैंने आपका शेयर कैपिटल प्लस डेट प्लस इक्विटी को मैंने टोटल पकड़ लिया. This includes my cash, वैश, excess cash, सारी चीजें. So in 5 years from 2023 till 2019, how much has the total capital gone up? So what I'm doing is I'm doing this 86 crores minus 53 crores. So my total capital has gone up by 32 crores in the business. Okay, understood? Similarly, this is the denominator. For the numerator, how much has my total PAT gone up because of these 32 crores? So this becomes this year's PAT minus 2019's PAT. This becomes 13 crores. So what becomes my percentage of efficiency over here? Sorry, मैंने उल्टा कर दिया. So what becomes my sorry. So what I have to do is मैंने 5 साल में कितना कैपिटल कमाया है. So I'll do a sum for this year till this year, 44 crores. I will do this number divided by this number. This gives me, out of every 1 rupee of sales, the management of this company has been able to redeploy 74 cents or 74 penny or पैसा back into the business. मैंने क्या किया है, टोटल कैपिटल मेरा कितना था 5 साल पहले, आज कितना हो गया, दोनों का डिफरेंस इज अराउंड 32-33 करोड़. एंड हाउ मच दे हैव बीन एबल टू अर्न. अब इसमें डेट भी हो सकती है, इसमें इक्विटी भी हो सकता है, सारी चीजें हो सकती है, which is 44 crores. So out of 44 crores, they have put back 32 crores into the business. बाकी का इनका डिविडेंड, डेट पेमेंट सब जगह चला गया. What is my ROIC, return on invested capital, which is 69%. When I multiply these two numbers, this is the rate at which my intrinsic value is compounding since the last 1 year. I'm not talking about what is intrinsic value. I'm talking about the rate at which the intrinsic value is compounding. Right? Even if I say ROIC is a very high number, even if I take this ROCE number or maybe ROE number, which is a lower number, my intrinsic value has compounded at the rate of 22% from starting till ending in the last 1-2 years. Right? They have been able to do this. Let's take it a little longer time frame. Let's take it 7 years. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 years तो है ही नहीं, इसका डेटा ही नहीं है. So 7 years was 30 crores. So I'll make it E38. This is 7 years. They have added 55 crores to their capital. Right? How much they have earned in the last 7 years? 55 crores. तो बेसिकली जितना कमाया मोटा मोटा सारा पैसा लगा चुके हैं. इसने पूरी जान लगा दी अपने धंधे को बढ़ाने में. So this becomes this, right? In a matter of 10 years. What is my average? Now these averages are very peculiar averages. What I am doing is I'm removing the best year and the worst year, and then I'm taking an average just to normalize. So this is my average. Intrinsic value is compounding anywhere between 25%, 22% to 28%. Right? And this is what the management is giving growth. 25-30% की growth करूँगा, 25-30% की growth करूँगा. Intrinsic value is compounding at this year. 8 तारीख को result है. I'll be looking at the result very carefully and trying and getting a sense what is actually happening over here. Right? Getting my point? So 2 things. At what rate management is putting money to compound? Number 1. Second point, what is the reinvestment rate back into the business? अगर मेरे को उसका capital allocation judgment ही समझ में आ गया, मुझे समझ में आ गया कि management is capable or not capable. And if the management is not capable, and there are tens and hundreds of stories going on Twitter and everywhere,
I don't want to be a part of that business, no matter it be a asset light business or asset heavy business. वहाँ उस गली जाके फायदा नहीं. So narratives are one thing, but the numbers should talk to you. That is my point. If the numbers don't talk to you, no point being there. So always focus on these two things: return on incremental capital employed and what is the reinvestment rate. So to calculate ROIC, you can do ROIC into reinvestment rate. That will give you the same answer. Alright? Learn this from Saber Notes. Any questions? इस पूरे बिजनेस में ना एक बहुत अच्छा काम ये हो गया है कि जितना पैसा उसने पैट से कमाया है उतना अमाउंट जो है ऑलमोस्ट उसने लगा दिया, वो तो अच्छी बात है. और इन्वेस्टमेंट के एक्टिविटीज में ऑलमोस्ट 48 करोड़ उसने वहां पर जो है इन्वेस्टमेंट किया है एंड ही हैज जस्ट टेकन ओनली 10 करोड़ एज फाइनेंसिंग एक्टिविटी and he has maintained debt to equity very low all through in fact. और उसने उसको लगा के ना उस पे रिटर्न अच्छा बनाया है. I'll tell you मैं मैनेजमेंट से मिलके आया हूँ, बात करके आया हूँ. ये अल्लाह की गाय है, बहुत ही शरीफ बंदा है. नहीं, ऑलमोस्ट जीपीएम जो है ना आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 28% के नीचे तो कभी आने के लिए दिया ही नहीं उसने. हाँ, ये तीन भाई हैं, जब तक ये तीनों भाई साथ में है ना, इज अ जेम ऑफ अ पर्सन. आई कैन टेल यू दैट. मैनेजमेंट की बात करते हैं. So use this in your other businesses where you have invested. Try and see what is actually happening, how much they are able to reinvest, and how much they are able to earn incremental returns on those reinvestments to compound. इसमें एक छोटा सा सवाल था मेरा, जब ये मैनेजमेंट इतना कॉन्फिडेंट था कि when he is able to put his own money and is able to generate gross profit margin also is maintained it throughout in the last 7 years, so is not allowed it to come down. Why he has not leveraged debt में जो है ना, if you go back, I think the maximum leaving the 7th year, if you go back, it is maximum is 0.26. Last 3 साल में तो जो है ना, he has almost made it debt free only in fact. When he was confident, क्योंकि उसका growth rate इतना fast है, almost averagely, if I am not wrong, it should be at least 18 to 20% का तो growth averagely आ ही रहा है इसमें. 25 to 30. तो 25 to 30 जब ही आ रहा है तो he could have leveraged on the debt and aggressively expanded so that he could have become much bigger than what he is today. बहुत कंजर्वेटिव मैनेजमेंट बहुत कंजर्वेटिव. ये सब सवाल हम लोगों ने पूछे थे उससे. He is very damn conservative. He does not want to leverage and he does not want to spoil the quality of his balance sheet. वो क्या बोलता है पता है कि यार मेरे पास ना तो कोई प्रॉपर्टी है ना कुछ है, मेरे पास धंधा ही है, मैं अपने दूसरी पीढ़ी को क्या दूंगा. दिस इज हाउ ही टॉक्स, राइट. तो मैं अपनी दूसरी पीढ़ी को क्या दूंगा दूसरी पीढ़ी को. And what they're trying to do is before getting their next generation management, उनके 3 भाई हैं, तीनों के एक का बेटा तो आ गया है, 2 की अभी पढ़ाई कर रहे हैं. What they are able to do is they are trying in automating the business. जितना ज्यादा ऑटोमेशन कर सकते हैं, पूरा ऑटोमेशन तो पॉसिबल नहीं है इनके धंधे में, जितना ज्यादा ऑटोमेशन कर सकते हैं उतना ये करने की कोशिश कर रहे हैं. So this is what they are doing. So one more business, I was looking at same numbers. I calculated the ROC, ROIC, वो सारी चीजें मैंने calculate की very quickly. And ये business में आपको इसलिए दिखाना चाह रहा हूँ कि in the last few months, whenever this batch of people were meeting and we were discussing on companies, this company was discussed a hell lot. This is Raga Productivity. ठीक है. So what they are doing is they are having a good rate of say 20-25%. और इसमें राकेश झुंझुनवाला का भी डिवेंचर लिए थे, उसमें स्टॉक प्राइसेस गॉन अप, दे हैव डन स्प्लिट और वो सब चीजें हैं जो भी हो रही सब अच्छी है. एंड दे आर ग्रोइंग एंड दे से कि वी विल बी एबल टू ग्रो एंड हम लोग ये करेंगे वो करेंगे, 10 तरह की बातें चल रही है. नाउ पहले में इसको क्या होता था, मेरे को ये कंसेप्ट तो पहले भी पता था, बट आई वाज नेवर एबल टू कैलकुलेट द री-इन्वेस्टमेंट रेट, बिकॉज मेरे जो री-इन्वेस्टमेंट रेट जाते थे, आई शो यू ओवर हियर, would always go haywire. See the reinvestment is 140%, which is wrong. I always knew this number was wrong, but इसको सही कैसे करना था मेरे को आता नहीं था.
So today first time I am able to crack it. Their actual reinvestment rate is 75%. Now for every rupee, they have reinvested back 75% on a 5-year average numbers, right? And their number, I am taking the lowest number. In ROIC, ROE, I am taking the lowest number, which is 21%. मैं ज़्यादा जाना ही नहीं चाहता. So you see, what is the rate of intrinsic value compounding? 16%, right? स्टॉक प्राइस ऊपर गया है नीचे गया वो मुझे नहीं पता, तो मेरे को उसमें कोई लेना देना भी नहीं है. Which company is compounding faster in the last example we saw or this example we saw? अभी वो cyclical है, मार्जिन आगे पीछे, वो सब बात की बात है. एक होता है ना, एक रामदेव अग्रवाल बार बार आके बोलता है प्राइस इज समथिंग डिफरेंट एंड वैल्यू समथिंग डिफरेंट. दिस इज वैल्यू. At what rate your value is compounding? So I don't want to go into any business where my value is not even compounding at GDP growth rate. आज 6% 7% की अगर मेरी इंटेंसिव वैल्यू कंपाउंडिंग आ रही है तो मेरे को जिंदगी में जाना ही नहीं. बात ही खत्म होगी, चाहे जितनी अच्छी स्टोरी चल रही है. अगर 30-35% के ऊपर जा रहा तो वो भी सस्टेनेबल नहीं है. एनीवे बिटवीन से 15 to 25 इज अ वेरी गुड नंबर. अगर ये नंबर सस्टेन रह रहा है एंड द बिजनेस इज एबल टू ग्रो, वेल इनफ. व्हाट इज द नीड टू सेल? तो चार्ट देखने की जरूरत ही क्या है? ये मेरा कहने की बात. So two things, a combination of two things, very well you can understand what the management is about to do and what is he willing to do, right? No book, no journal, nobody talks about these two things because they don't want you to know this. I hope that makes it, decodes it. ठीक है? तो कितना री इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और अगर वो ज्यादा री इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहा है एंड स्टिल इज एबल टू ग्रो. सपोज अगर मानो ये जो 75% हमने री इन्वेस्टमेंट किया है इस बिजनेस में, मानो इसने डिविडेंड ज्यादा दे दिया होता, मानो इसके पास ग्रोथ रेट नहीं होता, और मानो ये 75 की जगह ये 55 हो जाता, तो मेरा इंटरेस्टिंग वैल्यू कंपाउंडिंग कम हो जाता. मानो ये 35 हो जाता, अगर मैं मेच्योर बिजनेसेस में देखूंगा तो ये नंबर मेरा कम होगा. तो इवन इफ द रिटर्न रेशियोज आर हाई बट इंटरेस्टिंग वैल्यू वुड नॉट कंपाउंड. लेट्स टेक एट अ मेच्योर बिजनेस. अभी हम HUL को ले लें, ये कोई और बड़ा धंधा ले लें विच इज अ मैच्योर बिजनेस. कैन आई कंसीडर HUL एज अ मैच्योर बिजनेस? एवरीबॉडी बोलो बोलो बोलो. आई थिंक सर एशियन पेंट अगर पॉसिबल हो तो. हाँ, एक ही बात है, कोई एशियन पेंट HUL वो सब एक ही चीज होगी. So let's try and do the same exercise again very quickly. From 2014 I'll calculate the working capital. See, कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने के तरीके बहुत सारे हैं. धंधा जो मर्जी लो, play around with the numbers whatever you like, you have the stuff in your hands. Their return on incremental capital is just 10-11%. मतलब उनकी इतनी वैल्यू कि वो सस्टेन्ड खड़े हुए हैं पर कुछ भी वो धूम धड़ाका नहीं कर रहे हैं, राइट? Now I'll calculate the last 5 years numbers. So what is my earnings, cumulative earnings? I'm just doing a sum of last 5 years, which is this. What is my capital employed in the business additional in the last 5 years, which is this, right? Now see what they have done. What? Now if I do this divided by this, it gives me 109%. पता नहीं, again there is a problem over here, and compounding at 11%. क्या हो जाता है मेरा नंबर? मैं भी देख रहा हूँ, मुझे पता नहीं if I'm right or wrong. See, 12%. Such a mature business, such a good business, but growth and intrinsic value compounding का है, उन दूसरे धंधों से आती है. ना ये ज्यादा बढ़ेगा ना ये ज्यादा गिरेगा, because he is sustained, because he is putting money back into the business. लॉन्ग टर्म में देखो क्या हुआ है, ना ये ज्यादा बढ़ेगा ना ये ज्यादा गिरेगा, वही 2000 2500 2000 2500 यही आके स्टेबल हो गया. ठीक है. अगर ये जो इसने इन्वेस्ट बैक किया है, नो सपोज व्हाई हैव ही इन्वेस्टेड, आई थिंक 2 साल में इन्होंने कुछ ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है, जो इन्होंने कुछ टाई अप किया था अपने पेरेंट कंपनी के साथ. ये 2 साल को अवॉइड कर देते हैं जस्ट टू see the assets have gone up by 10x
and they had taken loans also, and इन्होंने dilute भी किया है, and ये सब चीजें सीरियस ऐसे ऐसे होना. एक ऑब्जर्वेशन है एचयूएल में जो है ना वो जीएसके जो है ना मर्जर हुआ था, तो दैट इज व्हाई दैट नंबर इज कमिंग लाइक दैट. थोड़ा सा अपन एक काम करते हैं, लेट्स एडजस्ट दैट, वी विल नॉट 2021 तो कैलकुलेशन आपका जो इंक्रीमेंटल बिजनेस है ना वो गलत हो जाएगा. 2021 के अपन आगे चलते ही नहीं ना, तो अपन क्या करते हैं, इसको अपन 2021 के पहले 5 साल लेते हैं. तो दीज आर माय अर्निंग्स, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, 2019 से 20 है, आई थिंक 20 है वो, 2020 है, सॉरी 1 2 3 4 5, दीज आर माय क्यूमुलेटिव अर्निंग्स. एंड व्हाट इज माय 1 2 3 4 5 सी, बोलो लेना है धंधा, बोलो. कंपाउंडिंग है ही नहीं, और ग्रोथ भी इतनी सुपर नहीं है, क्योंकि इतने बड़ा नंबर हो सके, बेस इतना बड़ा हो चुका है. सीरियस समझ में आ गया. क्वालिटी है, मैं नहीं मना करता क्वालिटी नहीं है, क्वालिटी है. अभी हम लास्ट एग्जांपल में क्या ले रहे थे, वी टेक द लोएस्ट नंबर्स, सो लेट्स नाउ टेक द हाईएस्ट नंबर. यू नो दिस इज द हाईएस्ट नंबर, स्टिल इट इज 1%. तो ये धंधा ज्यादा आरओसी कमा लेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, इसको ग्रोथ चाहिए. That's why I told you once earlier also, people don't act their age, companies don't act their age. He wants to buy growth. He has lots of money at his disposal. It is not going to add to your value. स्टॉक मार्केट गिरने लगेगा ना, जाके एचयूएल लेना, आपका पैसा नहीं डूबेगा. अब घूम फिर के 19-20 करके वहीं आगे खड़े हो जाओगे. तो सेफ्टी नेट, somebody who wants to preserve capital, किसी का बुढ़ापा आ गया, किसी को कैपिटल प्रिजर्व करना, so this is a safety net. Got it? This is how this works. बोलो समझ में आया कि नहीं आया? सर एक बार राजरत्न का देखो ना सर, कोविड का पहले का पीरियड. मैं यहाँ कोई क्लास नहीं चला रहा हूँ सर, मैंने आपको प्रोसेस दे दिया, बाकी करना आपने खुद है. मैंने कोई यहाँ कोई कोर्स नहीं बेच रहा हूँ आपको, इससे ज्यादा कुछ नहीं है. सॉरी सर, आई ऑल्सो हैव माई टाइम टू स्टडी. मैं कोई कोर्स नहीं चला रहा हूँ सर. ओके सर, आप अपने आप करो, मैंने आपको रिकॉर्डिंग दे दी, मैंने आपको प्रोसेस बता दिया. बाकी अगर स्पून फीडिंग चाहिए तो फिर मनमान सारे महागुरु बैठे हैं, उनके पास चले जाओ. So I was looking at Asian Paints. किसी ने Asian Paints बोला था, just to look at big companies. Asian Paints is doing 47% reinvestment rate and a 38% of returns. मैंने बनाया है Asian Paints का. This is Asian Paints. ये तो अच्छा है. 18%. अब बर्जर से अच्छा है, नेरोलैक से अच्छा है, पता नहीं. 18% होना है तो 35%. So that will take some time of yours to calculate the numbers. चलो, okay, thank you, bye bye, good night.